Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hope fine. And I rather believe that you people are well prepared to grasp the lecture which we are going to start today. And again, I say I rather believe that the things which we have studied so far, the things which we have covered so far, those things must be in your notebooks and must be in your minds. As you people know that we have started with radio news, and we are doing different segments and essentials of news. We studied news values, then we studied news elements, then we studied all those yardsticks by which we can measure a news, and we give it a kind of order in a news bulletin, that which news should come first and which news should come later, and so on. And afterwards we started doing the sources of news channels, especially of a radio channel. News sources, as you know, and I told you in the previous lecture, that news sources are all those means and ways through which news land on the table of an editor sitting in a newsroom. And what newsroom is, I have told you, and inshallah I tell you right now again. I was talking about reporters. Reporter is a very important source of any channel, and if the organization is very good enough and it has got a very professional attitude and they are very much committed kind of people who are working there with the people they are working for, especially and obviously they are working for the masses and the people they are sending news to. They have got a very huge network of reporters. They have deputed reporters in different areas in the same country where the news channel belongs to. And in different cities, they have deputed reporters, and reporters, what's their task? Actually, they are searching for and they are hunting news over there. If they see anything which they think must be reported in any news bulletin and must be a part of coming news bulletin, then they cover it. It may be any accident, it may be any incident, it may be any statement, it may be any press conference of any important personality of that very area. Like they are hunting news in the place or in the city they are working at for the channel they are working for. And if the channel is very good, if the radio organization is very good they are working for, then they have got, the news channel has got a very systematic kind of network abroad as well, in different countries, especially in those countries with which the ties of Pakistan are very sensitive, whether they are good or bad. But in those countries and their important cities, the reporters are working there, and all the time they are searching for any news which they could report for their country and for their channel. After reporters, there are senior reporters, and senior reporters are those people who look after the affairs of reporters. And if any report comes from any reporter, whether he is in the city or he is outside the city, anywhere in the country, or he is sending report from outside the country, then he reads it and he goes into detail and he checks the information given in that very report, and he has got different methods to recheck the reports. Like there are other sources as well. Like if the news is very important, it must be reported by different channels as well, and different agencies are there which are covering the same incident. So the person who is called senior reporter, this is his duty to check and recheck all those facts and figures and details which are put by the reporter who has sent the report to his channel. Afterwards, there are special reporters as well, and the special reporters are those reporters who are assigned very exclusive kind of task. Just like there is a kind of meeting between two presidents of different countries, of two countries,
or prime ministers are meeting somewhere in the world, whether in the country the news channel is, or outside the country, wheresoever. Just like there are platforms, as I told you, that just like UNO, if there is a kind of meeting at UNO level or at SARC level, and different presidents have been gathered there, then news reporters who are special news reporters, they go there and they cover those exclusive events or exclusive meetings for the channels they are working for. So this was a kind of recap about reporters. Afterwards, I told you that another very important source of news, that is called newsroom diary. And newsroom, I told you that it is a kind of place, a specific place, a specific room in any news channel where all the reporters, after covering their beat, they gather there if they are in the city, and editors are sitting there, and copywriters are sitting there, news writers are sitting there, and they are doing their job. And in the newsroom, there is a diary that is maintained every day. Like if press release comes from any department or any ministry or any company in the world, and there is a kind of function and it required to be covered, then all the details of that very function that is going to be held in the city, that would be mentioned in that very newsroom diary. In newsroom diary, I told you that there are different segments and there are different categories. Like there are portions. The very first portion is that deals with what, like what is the nature of that incident or that function that is to be covered by a reporter. Afterwards, there comes a portion in which it is written that who is the chief guest of that very function. Like if the chief guest is very much important kind of person, as I told you, that if president himself is there, or prime minister himself is there, or any other prominent figure is there, and the function is really very exclusive kind of function, it might be any press conference in which the minister has to highlight the policy relating to a certain matter, then it means that on first priority this function is to be covered. Like when we come to know the chief guest of the press conference or of the function, we actually evaluating the importance of that very function, and consequently the space given to that very function in the news bulletin. After this section, there is another portion in which it is written that where this function is to be held. And this is very much necessary, because if the function is going to be held in any other city and it falls in the domain of that very news channel, the very location of that place must be mentioned there, like if street number is there, or the house number is there, or any other significant kind of hue is there, that must be mentioned in that very portion which deals with address, that is venue. And afterwards it is written that what is the date of that very function, like on what date the function is going to be held. Date and time must be mentioned in that register or diary. And this is the duty of the reporter who is deputed on covering different kinds of issues. Like there are, as I told you, normally 10 or 12 reporters in a good news organization. The very first task which they do after reaching their office, they go and look up the diary and they see that what kind of functions are today, and they have to cover. After newsroom diary, we discussed another source, that is files. Files are present in a newsroom. Actually, files, it is not a direct kind of news source. There is a kind of event, just like there is a meeting of SARC countries presidents, and they are meeting somewhere, and all the details about SARC platform that are mentioned there, like when it came into being,
and how many sessions have been held so far and in which countries, and the same like Organization of Islamic Countries, that is very much important, and how many sessions have been held there, and in which countries, and in which cities in the world, and all the details about that. That must be mentioned in the file that is specifically allocated for SARC or OIC, or as I told you, UNO. Then there are different files which deal with national affairs. Just like in Pakistan, there is a kind of problem. Kalabagh Dam is a very big issue, and all the facts and figures and problems regarding Kalabagh Dam must be mentioned in that very file that deals with Kalabagh issue. Then there are files which are specific for Pakistan's relations with other countries, especially with India and America and Great Britain and all other countries with which Pakistan has got very sensitive kind of relations, and friendly, or they may not be friendly, but there are certain phases when both countries came very closer to each other, and there were different phases when both countries got drifted away from each other because of certain reasons. Like all those details must be mentioned there, and if there are kinds of talks which had been held between both countries at different occasions on certain issues, all the details about those issues and all the details about all those meetings which have been held between both countries on different levels, whether on a secretarial level or on a prime minister level or on presidential level, like all the details of all those meetings must be mentioned in that very file with dates and places, and the improvements in the relations between both countries. Afghanistan is there, Saudi Arabia is there, and as I told you, America and India, like Pakistan's relations with other countries. Then there are files which deal with international affairs, just like there is a war between two countries, and all the facts and figures regarding that war must be maintained in the file that is specific for that very issue, and all other issues which may arise in future. All the files and all the facts and figures must be mentioned in all those files. So file is actually a kind of backup to a reporter's knowledge, and human is to err, as it is said. A reporter is also a human being, though a bit different from other human beings, as I told you that he is a special kind of person who has got extraordinary knowledge regarding different things. A layman does not have that much knowledge that must be with a reporter. But as I told you that to err is human, and giving information regarding anything that is very sensitive kind of task, and it involves a great deal of responsibility, and when you are doing something with responsibility, it means that you are very much conscious regarding the things, like anything wrong should not be given to listeners. So a reporter must check and recheck all the facts and figures through different means and sources. After discussing this source that is called files, we discussed another source, that is check call. I told you that this is reporter's responsibility to make phone calls to different departments every day. From there, he may get any important news, and it can be given as breaking news. And what breaking news is, I told you that breaking news is a kind of news that possesses huge kind of significance. It is very much important kind of news, and it must be put on air as and when it reaches the newsroom, or as and when it reaches to the knowledge of a reporter. And it has got, as I told you, very importance for the nation and for people, and every channel is covering that breaking news. Breaking news, I told you that in American it is called sports story as well in American English. So these were different sources, and while discussing these sources, I told you another very important source, that is called news release.
or it is called press release as well. And I told you a bit history of press release as well. Like there was a person, his name was Ivy Lee. He was a public relationing officer and he was working for a railroad company that was Pennsylvania Railroad Company, and a train that was owned and run by Pennsylvania Railroad Company. It met an accident, and the person who I told you about, he convinced his company that all the reporters must be invited at a place to give the opinion and to give the comments of the company as well, because reporters may report something one-sided, and to give the other side of the picture, like the justification of the company, railroad company. He convinced the company to invite different journalists at a place, and he invited. Their transportation was that was afforded by the company, and refreshment was there. And afterwards, in a kind of press conference, all the details and causes and reasons of that accident, which a train met a few hours before, it was told and briefed to the journalists. So it was in 1906, 1906 में पहली न्यूज़ रिलीज जो थी वो जारी की गई. About news release, I told you that there are different types of news releases. The very first type, as I told you, it is always in written form, and it may be sent to news channel through different modes. The very first, the old and traditional as well, by dark, and afterwards with the improvements in means of communication, fax was there, and now news releases are sent to news channels through fax. And afterwards, another drastic kind of improvement was there with the emergence of internet technology, and now the news releases are sent to news channels through email as well. Like email means the moment you send the news release to the channel, the very next moment it reaches there, like it has saved time drastically. After it, I told you that different companies have got their own arrangements of recording, and they record the activities which they wish to be a part of a news bulletin, and they send the same recording on a cassette to the news channel. It may be audio news release in shape of audio cassette for radio channels, and it may be in shape of video news release in shape of video cassette that carries all the details and briefings which the company intends to be in part of the news bulletin, and it is sent to the channel, obviously TV channel, if we are talking about video news release. But as I told you that there are certain problems. The people who are working for different organizations, they are not that expert kind of people or skilled people, so there may be different loopholes or problems or pitfalls in the recordings which they do for a news channel, and they may not come to the merit of the news channel. So in this case, the reporter of that very news channel has to work a bit more, and he has to go there again to get the recording himself. Afterwards, I told you that there is an embargoed news release. An embargoed news release is a news release with instructions, and the details of that very news release cannot be a part of a news bulletin until further instructions are there from the company or from the ministry or from the government department. Like if they say that this is a detail about any policy, and it is instructed that this detail about the policy that is to be announced, it should be in the news bulletin after certain date, then the news channel is bound to follow the instructions which are attached with that embargoed news release. It happens sometimes with the news releases regarding the speech of Prime Minister or President.
in any issue, about any issue. Then we discussed about news release. Another thing that was its format. I told you that what is a format of a news release, and I told you that on the very first place in a news release, on that very page, there is a kind of caption that is called the heading, the headline of that news release, and it must be not more than 3 or 4 words. It must be very concise. It must be very comprehensive, very crisp kind of caption, and it tells about about the matter of the news release. After there is date line, and date line it tells the date of the news release when it was issued and the place from it was issued. And afterwards there is another segment that is called intro, obviously from introduction, and in introduction in maximum 2 or 3 lines, all the gist or all the crux, the main point of that news release is mentioned in that intro. Then comes the main body, and in main body all the details about that very press release and the purpose of that very press release is mentioned in the main body. Then comes media contact, and in media contact, that is very much necessary. This portion is very much necessary and important in any press release. In media contact, all the phone numbers and all the mobile numbers and address is mentioned in that very portion. Like if there is any kind of confusion regarding the press release, or the press release which has reached to the news editor, this is not worth reading, it cannot be read easily, then certainly there might be certain questions in the mind of the person who is reading that press release, and he has to make a news bulletin out of it. He has to make it a part of news bulletin. He will definitely come across a kind of questions. Then who will he talk to? Obviously there must be a kind of phone number, a contact number, after dialing which the news editor would clarify the problems he is facing in that very news release. After covering news release, I told you another source, that was monitoring. Monitoring is very important news source. I told you that in any news organization there are different monitors. They work in shifts, and all the time they are listening to different news channels from different countries, and these news monitors are expert in the languages they are listening the news in, and unless and until they are proficient in that very news language, they cannot monitor the news and all the details and important points in that very news bulletin coming from any other country and coming from in any other language. And I told you that there are 2 ways to monitor different programs. One is on one hand the news bulletin is going on, and newscaster is reading the news, and simultaneously the monitor is jotting down the main points. But you know, in this a huge risk involves, and just to avoid the risk of missing anything, another way, and that is approved way, that is recommended way, is that the news bulletin must be recorded first, and afterwards from recording the monitor must note down the main points of that very news bulletin. After discussing monitors, we discussed another source, that is called press conference. Just like politicians are there, or any important figure of any society, he invites journalists to a certain place, and there he gives his opinion about anything, or he gives any statement about anything, and journalists are there and they are recording the statement, they are recording the opinion of that very person who has invited the journalists over there. Like, this gathering is called press conference, in which journalists are invited and they are given certain briefing about anything, and afterwards the person who has invited there and who wishes to give his opinion about anything, he faces the questions of journalists. Like, if there is
any question in a journalist's mind, then he would put the question to that very person who has invited all the media men there. So far we have discussed all these uh, types of sources, and they are actually news gathering sources. And now today we are going to discuss very important news source, that is news agency. न्यूज़ एजेंसी क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका बुनियादी काम ही ये है कि ये मुख्तलिफ जगहों से ख़बरें जमा करते हैं और आफ्टरवर्ड्स ये ख़बरें जो हैं ये सेल आउट करते हैं टू डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स एंड न्यूज़पेपर्स. न्यूज़ एजेंसीज जो हैं इनके पास बहुत रिफाइंड एंड मॉडर्न काइंड ऑफ इक्विपमेंट होता है. इनके all the time monitors are working there, all the time their reporters are working in different parts of the world, क्योंकि जिस तरह कि मैंने आपको बताया था कि दुनिया जो है वो सुकड़ के एक ग्लोबल विलेज की शक्ल अख्तियार कर चुकी है और दुनिया में कहीं पे भी कोई वाक़या रूनमा होता है तो वो अब कोसों दूर नहीं होता. पहले तो ये होता था कि कहीं पे कोई वाक़या रूनमा हुआ है 4 या 5 मील के फासले पर या 10 मील के फासले पर कोई बस्ती है, वहाँ पे कोई वाक़या रूनमा हो गया है, कोई कत्ल हो गया, कोई डकैती हो गई है, तो उसकी खबर जो है वो हम तक आते आते कई दफ़ा कई दिन लग जाया करते थे कि जब तक वहाँ से कोई शख्स नहीं आएगा तब तक हमें उस खबर का के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल नहीं होगी. लेकिन अब हालात वो नहीं रहे. मीडिया एक्सप्लोजन जो है इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है और पूरी दुनिया जो है वो सुकड़ के एक गांव बन गई है और अब कोई भी चीज़ किसी भी शख्स के लिए अजनबी नहीं है. लाइक आई और एनी पर्सन हु हैज़ नॉट गॉन टू England or in America or in South Africa, he may got all the details about each and every location of these countries and the cities of these countries. Like this could not happen decades before. कुछ अरसा पहले, कुछ अशरे पहले ये मुमकिन नहीं था. तो ये जो एक ख़बरों की एक दौड़ है, मुख्तलिफ चैनल्स पूरी दुनिया में आ चुके हैं और इस वक्त बिला मुबालगा हंड्रेड्स की तादाद में चैनल्स हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया में ख़बरें तलाश कर रहे हैं और उनका जो आपस में एक कंपटीशन है वो that is very important competition. Neck to neck competition is going on amongst all these news channels, or every news channel tries to give the news first. He wishes to be, or that news channel wishes to be the first to give the news to its listeners or to its viewers or to its readers in case of newspaper. तो ये सारी जो सूरत हाल है इससे निपटने के लिए, इन चैलेंजेस से ओहदा बरा होने के लिए कुछ लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस तरह किया जाए कि बजाय इसके कि एक जो न्यूज़ चैनल है उसके जो रिपोर्टर्स हैं उन्हें मुख्तलिफ शहरों में फैलाया जाए, एक न्यूज़ एजेंसी ऐसी बनाई जाए कि जो ये काम करे कि मुख्तलिफ शहरों में वो अपने जो रिपोर्टर्स हैं वो डिप्यूट करते हैं, वो वहाँ पे ख़बरें हंट करते हैं, ख़बरें तलाश करते हैं और वो फिर भेजते हैं अपनी न्यूज़ एजेंसी को, और जो न्यूज़ एजेंसी है वहाँ से फिर जो मुख्तलिफ चैनल्स हैं वो ख़बरें जो हैं वो बाकायदा ख़रीदते हैं. अ गुड न्यूज़ चैनल इज़ द चैनल which has got its own reporters throughout the world. But in case if the reporter fails to send the news about anything, then these news agencies are there to help you out. ये जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, जिस तरह कि मैंने बताया कि सारा दिन इनका काम ही यही है कि ये ख़बरें जमा करते हैं और इनके अपने डिफरेंट सोर्सेज हैं, and they have got all those sources which I have told you earlier. We have discussed the sources employed by any news channel, but they work in a very systematic manner, क्योंकि इनका काम सिर्फ ख़बरें जमा करना है और उन्हें फिर बाद में फ़रोख्त करना है. जबकि जो टीवी चैनल है या रेडियो चैनल है उनका काम सिर्फ ख़बरें जमा करना नहीं है, बल्कि उनकी नोक पलक संवारना, उन्हें एक मखसूस लबो लहजे में लिखना, उसे एक मखसूस ज़बान में लिखना और उसके बाद उसे उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो इन्वॉल्व है उसमें.
प्रेजेंटेशन में, अगर ये टीवी चैनल है तो वहाँ पे वो सेट वगैरह इन्वॉल्व है, न्यूज़ कास्टर इन्वॉल्व है, लाइक देयर इज़ अ वेरी ह्यूज मैन पावर इज इन्वॉल्व एंड ह्यूज मशीनरी इज इन्वॉल्व इन गिविंग न्यूज़ टू डिफरेंट पीपल. लेकिन जो न्यूज़ चैनल है, सॉरी, जो न्यूज़ एजेंसी है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि उसने खबरें जमा करनी है और उसने खबरें देनी है. अच्छा, अब जिस तरह के आपको मैंने बताया कि जिस तरह एक नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा है, तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो न्यूज़ एजेंसीज हैं, हाउ शार्प दे आर टू बी टू गैदर न्यूज़ एंड आफ्टरवर्ड्स टू गिव इट टू डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स. इन्हें हर वक्त बहुत ज़्यादा विजिलेंट होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा तैयार होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इन्हें कॉन्शियस होना पड़ता है रिगार्डिंग सर्चिंग फॉर न्यूज़. तो न्यूज़ एजेंसीज जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और दुनिया की जो मशहूर न्यूज़ एजेंसीज हैं, राइटर जो न्यूज़ एजेंसी है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और एक बहुत पुरानी और मशहूर न्यूज़ एजेंसी है. इसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक की न्यूज़ एजेंसीज हैं. चाइना की एक अपनी न्यूज़ एजेंसी है, ईरान की अपनी है, इस तरह मुख्तलिफ ममालिक की अपनी न्यूज़ एजेंसीज हैं. शुरू शुरू में तो न्यूज़ एजेंसीज जो थी, दे यूज टू बी गवर्नमेंट owned, but afterwards private sector was also encouraged to get into the field, and right now, along with government news agencies, private news agencies are also there, and they are selling out news after gathering news from different places in the world. पाकिस्तान में भी बहुत सारी न्यूज़ एजेंसीज काम कर रही हैं, और वो प्राइवेटली भी अपने तौर पे भी काम कर रही हैं, एंड गवर्नमेंट owned न्यूज़ एजेंसीज आर आल्सो देयर. Some important news agencies are just like Associated Press of Pakistan, and afterwards Pakistan Press Association, that was converted into Pakistan Press International, and United Press of Pakistan is important news agency. इसके अलावा सना न्यूज़ पाकिस्तान में काम कर रही है. इसके अलावा ONI, ऑनलाइन न्यूज़ इंटरनेशनल, ये मुख्तलिफ न्यूज़ एजेंसीज हैं, ये पाकिस्तान में काम कर रही हैं. अच्छा, न्यूज़ एजेंसीज के हवाले से वन थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच आई नीड टू मेंशन हियर, दैट न्यूज़ एजेंसीज आर गैदरिंग जस्ट हार्ड न्यूज़. When I say hard news, it does not mean that the news is made of iron or wood, and when we touch it, it is hard, it feels hard. It is a term, and that is contrasted with soft news. I tell you that is very important to be known, that what hard news is and what soft news is. Hard news जो है वो न्यूज़ है, वो खबर है, दैट न्यूज़ आइटम दैट कंटेन्स जस्ट द फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट एनी इंसिडेंट और एक्सीडेंट और एनी हैपनिंग इन द वर्ल्ड. उसमें नॉर्मली 5 W's और 1 H को कवर किया जाता है. 5 W's से आपको मैं तारुफ करवा चुका हूँ, और एक जो H है उससे भी आपको मैं तारुफ करवा चुका हूँ. 5 W's, व्हाट, एक वाक़या जो है वो क्या है, when वाक़या कब रूनुमा हुआ, where वाक़या कहाँ रूनुमा हुआ, what, when, where, who, WHO, उस वाक़े में कौन लोग इन्वॉल्व हैं, और इसके अलावा what, when, where, who and why, कि वो वाक़या जो है, कोई अगर स्टेटमेंट है या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई. इसके अलावा 1 H है कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो वो किस तरह रूनुमा हुआ है, उसकी कॉजेज क्या हैं. लाइक दीज आर द थिंग्स विच आर कंसंट्रेटेड एक्चुअली बाय न्यूज़ एजेंसीज, एंड दे put the answers to these 5 W's and 1 H in a news item, and these are the things which they sell. Like what news agencies work for, they are searching for hard news, and they are selling out hard news, not soft news. Now, obviously, a question would be in your mind that hard news is there, then what soft news is? Soft news actually those items, news items, which go into detail of any hard news. उसके जो मुख्तलिफ उसके असबाब हैं, मिसाल के तौर पे कहीं पे कोई कत्ल हो जाता है
تو اس قتل کے جو اسباب ہوتے ہیں ہم انہیں جب جنرلائز کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ معاشرے میں جو جرائم ہیں وہ کیوں بڑھ رہے ہیں. تو اس کے اوپر جو ایک آرٹیکل لکھا جائے گا یا اسے ایک فیچر کی صورت میں دیا جائے گا جو ایک خبر کے اوپر بیس کر رہا ہوگا, یا اس کے اوپر جو ایڈیٹوریل لکھا جائے گا, اس کو ہم کہتے ہیں سافٹ نیوز. تو سافٹ نیوز از اے ڈیٹیلڈ kind of news that covers all the aspects, whether they are social or they are economic or they are political or aspects of any hard news. These are covered in soft news items. And as I told you that features and columns and editorials in a newspaper, they are soft news. Soft news I told you, and I told you about hard news. And in a news bulletin, as we are discussing here ریڈیو نیوز, تو جو ریڈیو نیوز کا جو بلٹن ہے اس میں ایک نیوز کمنٹری چلتی ہے کہ ایک خبر چل رہی ہے, خبریں چل رہی ہیں, نیوز کاسٹر جو ہے وہ خبریں پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہے, تو اس میں وہ ایک کوئی واقعہ رونما ہوا ہے, تو اس کی جو ڈیٹیلز ہیں, اس کی ہارڈ نیوز تو اس نے آپ کو بتا دی کہ فلاں جگہ کے اوپر ایک جو ٹرین ہے وہ ایک حادثے کا شکار ہو گئی ہے. تو اس میں وہ آپ کو بتائے گی پھر یا بتائے گا کہ اس بارے میں ہم سنتے ہیں نیوز کمنٹری. تو وہ جو نیوز کمنٹری ہے ایکچولی دیٹ از سافٹ نیوز اف وی ٹاک اباؤٹ نیوز بلیٹن آف ریڈیو. تو جو نیوز ایجنسیز ہیں جہاں سے میں نے آپ کو بتانا شروع کیا تھا, دے ایکچولی ورک فار گیدرنگ hard news and they do not work for gathering soft news. So dear students, this is all with news sources, and we have covered the possible news sources which are present in books and which are in the knowledge of a journalist who is working for radio or TV or newspaper. And these are the possible news sources which are employed by any channel or news agency to cover and to gather news for a news bulletin. اب تک ہم بہت کچھ پڑھ چکے ہیں نیوز بلٹنس کے بارے میں, اور آئی ہوپ دیٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ یو پیپل ہیو نوٹیڈ ان یور نوٹ بکس. اور اگر آپ نے نوٹ بکس میں آپ نے نوٹ نہیں کیا تو آپ اپنے دوستوں سے مدد لیجیے, اور اس کے علاوہ جو ہینڈ آؤٹس آپ کو ملیں گے آپ کے ساتھ ہیں اس وقت, ان میں یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ موجود ہیں. لیکن جس طرح کہ میں اکثر آپ کو کہا کرتا ہوں کہ ہینڈ آؤٹ جو ہے ایکچولی دیٹ از جسٹ جسٹ اور کرکس آف دی لیکچر. اس میں سبھی جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ شامل یقیناً کی جاتی ہیں, لیکن جو چیزیں لیکچر میں ہوتی ہیں ڈیفینیٹلی دے آر ناٹ پریزنٹ, لائک ایوری تھنگ از ناٹ پریزنٹ ان ہینڈ آؤٹ. تو لیکچر سننا بہت زیادہ ضروری ہے آپ کے لیے, اور اس کے علاوہ جو نوٹس ہیں وہ لینا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کا ایک اپنا جو ریکارڈ ہے وہ مینٹین ہوتا رہے, اور جب ایگزامز ہوں یا آپ نے کوئی اسائنمنٹ بنانی ہو تو آپ کو ادھر ادھر سے تلاش کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے, اور آپ کے جو اپنے نوٹس ہیں آپ ان سے مدد حاصل کر سکیں. ایک اہم چیپٹر جو ہے نیوز کا وہ ہم ختم کر چکے ہیں, اور نیوز کے بارے میں ہم اب تک تقریباً سبھی چیزیں ڈسکس کر لی ہیں کہ خبر ہوتی کیا ہے, خبر آتی کہاں سے ہے, خبر بنتی کیسے ہے. اس کے علاوہ جو ویلیوز ہیں خبر کی, کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ایک عام واقعے کو خبر بنا دیتی ہیں. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی ڈسکس کر لیا ہے کہ ایک عام واقعہ جو ہے وہ خبر بن گیا ہے, لیکن اس کے بعد وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں کہ جو اسے پہلے دوسرے تیسرے نمبر کے اوپر لے کر کے آتے ہیں. جو ویلیویشن ہے ایک خبر کی ترتیب کے لحاظ سے وہ یقیناً خبریت کے حوالے سے ہوتی ہے, یہ ہم ان ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں. اس کے علاوہ ہم نیوز سورسز کور کر چکے ہیں, اور جو امپورٹنٹ نیوز سورسز ہیں, اور آئی ہیو ٹرائیڈ ٹو مینشن all the possible news sources here. Ab the next topic is, what is the difference between radio news and TV news, and what is the difference between radio news and a newspaper news. یہ جو ایک فرق ہے کہ کیوں ریڈیو نیوز, اخبار کیوں نہیں, یا ٹی وی کیوں نہیں, تو اس سلسلے میں تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے. جو ایک ریڈیو نیوز ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے. جب ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں اخبار سے تو سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ آتی ہے لٹریسی. لائک اے نیوز پیپر کین بی ریڈ بائی اے پرسن ہو نوز ہاؤ ٹو ریڈ.
لیکن جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جو لٹریسی ریٹ ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے، تو جو لوگ لٹریٹ نہیں ہیں بٹ دے ہیو گاٹ دیئر اون اوپینین، دے ہیو گاٹ اے ویری اسٹرانگ وزڈم، جسے آپ فوک وزڈم کہتے ہیں، ان کی ایک اپنی رائے ہے، وہ سوچتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، اور اس کوئی بھی جو واقعہ رونما ہوتا ہے کسی بھی حوالے سے، کوئی مذہبی واقعہ ہو، کوئی مذہبی معاملہ ہو، یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو، یا کوئی پولیٹیکل مسئلہ ہو پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں، تو وہ اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ رائے دیتے ہیں، لائک ویئر ایور یو آر ناؤ، اف یو ہیو ناٹ آبزروڈ اٹ، اسٹارٹ آبزرونگ، گو ٹو مارکیٹس، آپ کسی باربر کی دکان پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ بڑے پولیٹیکل مسائل جو ہے نا بڑے وائزلی ڈسکس کر رہے ہیں، اور ان کی ایک بڑی ایکسپرٹ رائے ہے، تو ان تک جو خبر کا پہنچانا ہے دیٹ از ویری نیسسری، اور اس کے لیے جو اہم ترین ذریعہ ہے وہ ریڈیو ہے۔ تو سب سے پہلا جو ڈفرنس ہے وہ یہی ہے کہ ایجوکیشن کا ڈفرنس ہے کہ اخبار جو ہے وہی شخص پڑھ سکتا ہے کہ جو پڑھا لکھا ہے، لیکن جو پڑھا لکھا نہیں ہے بدقسمتی سے، اب ظاہر ہے کہ پوری دنیا کے دروازے اس کے اوپر بند تو نہیں کر دینے، تو اس تک جو امپرومنٹس ہو رہی ہیں اس تک پہنچانے کے لیے ریڈیو از ویری امپورٹنٹ۔ ایک اور اہم چیز وہ یہ ہے کہ ریڈیو جو ہے یہ کین بی ٹیکن اینی ویئر، اس میں اسے آپ کسی بھی جگہ کے اوپر لے کر جا سکتے ہیں، یہ پورٹیبل ہوتا ہے، کین ایزیلی بی فٹ انٹو یور پاکٹ، اور آپ جہاں پہ جا رہے ہیں، آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، کسان کھیتوں میں ہل چلا رہا ہے، کوئی خاتون جو ہے وہ مشین کے اوپر سلائی کر رہی ہیں، تو وہ ریڈیو سن سکتی ہیں، ریڈیو خبریں جو ہیں وہ سن سکتی ہیں، اور خود کو یہ سبھی لوگ جو ہیں جو مختلف کاموں میں مصروف ہیں وہ نہ اخبار پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ڈرائیو کر رہا ہے، ہی کین ناٹ ریڈ نیوز پیپر، ایک جو پڑھا لکھا کسان ہے وہ جب ہل چلا رہا ہے تو وہ نیوز پیپر نہیں پڑھ سکتا، نہ وہ ٹی وی دیکھ سکتا ہے، تو ہی ہیز گاٹ ریڈیو سیٹ ود ہم سیلف، جس کے ذریعے سے وہ پوری دنیا سے آگاہی حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح خواتین، جس طرح کہ میں نے کو بتایا کہ وہ کچن میں مصروف ہیں، اور پاکستان کی خواتین جو ہیں وہ دن بہ دن ان کا شعور جو ہے وہ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں بیدار ہو رہا ہے، اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، باشعور ہونے کے لیے پڑھا لکھا ہونا اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے۔ یقیناً پڑھائی جو ہے آپ کے مختلف فیکلٹیز کو شارپ کرتی ہے، آپ کو معاشرے میں آگے لے کر کے جاتی ہے، آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہے، لیکن ایک ان پڑھ شخص جو ہے جس نے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے وہ بھی ایک باشعور آدمی ہے، اسے بھی پتا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ اسی طرح جو خواتین کام کر رہی ہیں مختلف فیکٹریز میں یا مختلف جگہوں پہ، یا اپنے کچن میں ہی مصروف ہیں، تو وہ ٹی وی نہیں دیکھ سکتی، لائک اف شی از کوکنگ، ہاؤ کم شی کین واچ ٹی وی؟ شی کین ناٹ سمپلی. And how come she can read newspaper? Again, I say she cannot. If a person is busy at an end, he cannot read newspaper and he cannot watch TV. تو وہاں پہ اسے باخبر رکھنے کے لیے جو ریڈیو ہے، this is the most vital kind of means of communication، جس کے ذریعے آپ باخبر ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ وجہ ہے ریڈیو نیوز کی جو اس کی امپورٹنس ہے۔ دوسرے جو اس کا فرق ہے وہ لینگویج کے حوالے سے فرق آتا ہے کہ ریڈیو نیوز جو ہیں ان کا کیا فرق ہے ایک اخبار کی جو لینگویج ہے اس کا۔ تو اس میں سب سے پہلا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو اخبار میں لینگویج استعمال کی جاتی ہے وہ ریٹن لینگویج ہے۔ جو ریٹن لینگویج ہے اس میں آپ مشکل لفظ جو ہیں وہ بڑی آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ جو شخص پڑھا لکھا ہے اس کا جو ایک نالج ہے یا اس کی جو ایک ووکیبلری کا ذخیرہ ہے وہ یقیناً ایک عام یا ان پڑھ شخص سے زیادہ ہے۔ تو یہ توقع کی جاتی ہے کہ جو شخص نیوز پیپر پڑھ رہا ہے وہ یہ مشکل لفظ جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے، یہ اس کی فہم سے باہر کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے نیوز پیپر لکھتے ہوئے، نیوز پیپر کے لیے خبر لکھتے ہوئے بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشکل لفظ جو ہیں وہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن ریڈیو جو ہے یہ چونکہ سامنے رکھا جاتا ہے ان لوگوں کو بھی کہ جو پڑھ نہیں سکتے، جس طرح کہ آئی ہیو ٹولڈ یو ارلیئر، تو اس میں جو زبان ہے اسے بہت زیادہ سادہ، آسان فہم اور اسے ایک روزمرہ زندگی سے قریب تر رکھنے کی
दानिस्ता कोशिश की जाती है, उसमें जो स्पोकन लैंग्वेज है, द वे आई एम टॉकिंग टू यू, जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, या मुख्तलिफ लोग जो हैं वो माशरती सतह के ऊपर एक दूसरे से बात करते हैं किसी भी मामले पे या किसी भी बारे में किसी भी हवाले से, तो उन वो जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं रोज़मर्रा की गुफ्तगू, क्लकवियल लैंग्वेज। तो क्लकवियल लैंग्वेज में जो एक रिटन इफेक्ट है या एक जो लिटरेरी टच है वो नहीं होता और ना ही होना चाहिए, क्योंकि आपने बात कहनी है, आपने बात अगले तक पहुंचानी है, आपने उसे कंफ्यूज नहीं करना। कम्युनिकेशन का सबसे पहला असूल ही यही है कि बात जो है वो इस तरह की जाए, मैसेज को इस तरह डिज़ाइन किया जाए कि जो सुनने वाला है या जो देखने वाला है या जो पढ़ने वाला है वो उसकी समझ से बाहर ना हो। तो कोशिश ये की जाती है कि जो टारगेट ऑडियंस है उनका जो मिनिमम लेवल है उसको सामने रख के, उसको मलहूज़े खातिर रख के एक हम जो खबर है उसको लिखते हैं। ये एक दूसरा फ़र्क है कि उसमें जो मुश्किल लफ्ज़ हैं वो इस्तेमाल नहीं किए जाते। एक तीसरा जो फ़र्क है न्यूज़पेपर की लैंग्वेज में और रेडियो न्यूज़ की लैंग्वेज में, वो ये है कि उसमें जो फ़िक्रा है उसे रेडियो न्यूज़ में छोटा रखा जाता है। आपने देखा होगा कि जो रिटन एक्सप्रेशंस हैं उसमें एक फ़िक्रा जो है वो बाज़ दफ़ा एक पूरे पैराग्राफ का भी एक फ़िक्रा हो जाता है या हो सकता है। स्पेशली न्यूज़पेपर्स में आपने जो इंट्रो पढ़ा है वो पूरे जो 5 W's एंड 1 H हैं वो एक ही जुमले में कवर कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ कॉमास और कॉलन्स और सेमी कॉलन्स। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं या न्यूज़ कास्टर जो है वो खबरें सुना रहा है, ही कैन नॉट यूज़ कॉमास और कॉलन्स और सेमी कॉलन्स। वो आपको उसने बात पहुंचानी है और बात इस तरह पहुंचानी है कि जो फिक्रा जो है वो बहुत सादा हो, कॉम्प्लिकेटेड ना हो। इसी तरह एक पेरेंट थीसिस का हम यूज़ करते हैं कि आपने एक सिंपल फिक्रा लिखा है, मिसाल के तौर पे कल रात जो एक्सीडेंट हुआ, कॉमा देते हैं और उसके बाद लिखते हैं शाम 6 बजे रावलपिंडी के करीब, कॉमा बंद किया और उसके बाद लिखा उसमें इतने लोग जो हैं वो हलाक हुए। अब ये जो स्टाइल है ये दिस इज अ प्योर रिटन स्टाइल एंड इट इज नॉट यूजफुल इन एनी वे फॉर रेडियो न्यूज बुलेटिन। अब ये फिक्रा जो है अगर मैं इसे इस तरह पढ़ूंगा तो या तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे कॉमा है, लाइक रावलपिंडी के नज़दीक कॉमा, उसके बाद आपने एक इन्फॉर्मेशन दी, उसके बाद कॉमा बंद किया और फिक्रा जो है वो शुरू से नेक्स्ट उसका जो कंटिन्यूएशन है वो कॉमे के बंद करने के बाद आपने पूरी की। तो आप अपने सुनने वाले को कंफ्यूज कर रहे हैं, सुनने वाले को आपने एक मुश्किल में डाल दिया है उसे कॉम्प्रीहेंड करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। तो जो अंडरस्टैंडेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए एक सामे की ज़रूरी है कि जो पेरेंट थीसिस वगैरह हैं, ये जो कॉमर्स का इस्तेमाल है ये ना किया जाए। इससे जो बात है वो मुश्किल होती है, दकीक होती है। दकीक एक मुश्किल लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है, ये स्पोकन नहीं है। इसीलिए इसे जो रेडियो न्यूज़ बुलेटिन है उसमें इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन आप अखबार में पढ़ सकते हैं कि फ़लाँ प्रोफेसर साहब ने इस मौजू के ऊपर एक दकीक और पुरमग़ज़ लेक्चर दिया। अब एक जो न्यूज़पेपर पढ़ने वाला है, उस जिस तरह के मैंने आपको बताया कि उसका जो एक पढ़ने का लेवल है, उसका ज़ख़ीरा अल्फाज, जो वोकेबलरी स्टोरेज है उसके पास वो ज़्यादा है एक अनपढ़ शख्स से। तो उससे तो समझ में आ जाएगा कि दकीक मीन्स मुश्किल। तो दकीक का जब हम रेडियो के लिए लिखेंगे तो उसको हम कहेंगे एक मुश्किल, एक मुश्किल मौजू के ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की। अब ये एक आसान सी बात है जो हर किसी की समझ में आ जाती है, लेकिन जब आप ये कहेंगे कि एक दकीक किस्म की मुहय्यरुल अक्ल किस्म का एक वाक़या रूनुमा हो गया, तो आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि एक हैरान कर देने वाला वाक़या रूनुमा हुआ। मुहय्यरुल अकूल वाक़या जो है ये अखबार की ज़ुबान है और हैरान कर देने वाला वाक़या ये न्यूज़ बुलेटिन जो कि रेडियो के लिए तैयार किया जा रहा है उसकी ज़ुबान है। तो ये चंद एक फ़र्क हैं। इसके अलावा इंग्लिश जो न्यूज़ बुलेटिन्स हैं उनमें स्पेशली मैं आपको कहूँगा, उर्दू में तो सेम है लेकिन इंग्लिश में वो ये है कि जो प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल है एक हेडलाइन लिखते हुए, वो न्यूज़पेपर का जो इंग्लिश वर्जन है उसमें इट ऑलवेज गोज इन प्रेजेंट टेंस।
लाइक अगर पाकिस्तान ने मैच जीत लिया है, like this is something which happened in the past, but when they are writing a headline for a newspaper to cover this story, उसमें ये होगा पाकिस्तान wins the match. अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, जिसका अगर उर्दू में तर्जुमा किया जाए तो यूं होगा कि पाकिस्तान मैच जीत लेता है. अब ऑब्वियसली इसकी कोई सेंस नहीं है, ये एक लिंग्विस्टिक्स का प्रॉब्लम है. हर लैंग्वेज की अपनी ज़रूरियात होती हैं, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हर लैंग्वेज का एक अपना मूड होता है. तो जब इसी को हम उर्दू में लेकर के आएंगे तो हम हमारी जो लैंग्वेज का मूड है, हमारी जो लैंग्वेज का टेस्ट है, उसके मुताबिक हम पास्ट ही की बात करेंगे कि पाकिस्तान ने मैच जीत लिया. उर्दू न्यूज़पेपर्स में भी यही लैंग्वेज इस्तेमाल होती है और न्यूज़ बुलेटिन्स में भी यही लैंग्वेज इस्तेमाल होती है. लेकिन जो इंग्लिश न्यूज़ बुलेटिन्स हैं उनमें भी जो हेडलाइंस दी जाती हैं उनके लिए पास्ट टेंस ही इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल नहीं किया जाता. एक तो ये फ़र्क हो गया प्रेजेंट टेंस का कि इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में जो एक हेडलाइन है इट गोज़ इन प्रेजेंट टेंस. But in radio news bulletin, whether it is in Urdu or English, the headlines always go in past tense, क्योंकि खबर वही है जिसका ताल्लुक माजी के साथ है, जो वाक़या रूनमा हो चुका है. ये जुमला जो मैंने कहा ये माजी का हिस्सा हो गया है. I have said it. इस जुमले को मैं कह चुका हूँ, आप सुन चुके हैं, यही खबर है. इस लम्हे से पहले जो कुछ भी हो गया वो माजी में हुआ और वो सभी जो है वो खबर वही होगी जो माजी में होगी. फ्यूचर के बारे में भी खबर हो सकती है कि फ्यूचर में ये काम होगा, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं. बट हियर अगेन यू विल नॉट यूज प्रेजेंट टेंस. तो जिस टेंस में बात हुई है या होगी उसी टेंस को इस्तेमाल किया जाएगा. लेकिन आपको जिस तरह मैंने बताया कि न्यूज़पेपर्स में हेडलाइन लिखते हुए माजी की बातों के लिए प्रेजेंट टेंस ही इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा एक जो अहम फ़र्क है रेडियो न्यूज़ में और न्यूज़पेपर की जो एक ख़बर आप पढ़ते हैं किसी भी अखबार में, वो ये है कि रेडियो में पर्सनल इफेक्ट है, पर्सनल अप्रोच यूज़ की जाती है रेडियो में. लाइक एज इफ यू हैव इनवाइटेड अ पर्सन एज गेस्ट एंड ही इज़ टेलिंग यू अबाउट द हैपनिंग्स इन द वर्ल्ड. एक जो न्यूज़ कास्टर है एक्चुअली ही बिकम्स अ फैमिली मेम्बर ऑफ योर फैमिली, ही बिकम्स अ मेंबर ऑफ योर फैमिली. और वो खबरें इस तरह पढ़ रहा है कि जिस तरह वो आपसे गुफ्तगू कर रहा है, आपको बता रहा है कि फ़लाँ जगह के ऊपर ये वाक़या रूनमा हो गया है, या प्राइम मिनिस्टर ने इस मामले में ये कहा है, या जो किसान हैं उनके लिए हुकूमत ने ये नई पॉलिसी जो है या एक नया इंसेंटिव जो है वो अनाउंस किया है. तो वो बड़े आम से लबो लहजे में, आम सी ज़बान में, आम सी वोकेबलरी इस्तेमाल करते हुए वो आपसे एक आपकी सतह पे आके बात कर रहा है. तो ये जो पर्सनल अप्रोच है ये न्यूज़पेपर में नहीं है. जो एक बहुत दफ़ा इस तरह होता है कि जो खबर पढ़ने वाला है उसको पता भी नहीं होता कि ये खबर जो है ये रिपोर्ट किसने की, उसके बाद इसे लिखा किसने, उसके बाद इसने उसकी कॉपी बनाते हुए पेस्ट किसने किया और ये किन हाथों से गुजर के आप तक पहुंची है. लाइक इट इज़ टोटली एंड एब्सोल्युटली इम्पर्सनल अप्रोच कि जिसमें आपको ये पता नहीं कि इस खबर को आप तक लाने वाला कौन है सिवाय उस न्यूज़पेपर के नाम के. लेकिन जब आप खबरनामा सुन रहे हैं, रेडियो के ऊपर आप खबरें सुन रहे हैं, तो आपको बकायदा न्यूज़ रीडर का, न्यूज़ कास्टर का नाम का आपको पता होता है और आप उससे फेमिलियर होते हैं. आप उसकी जो गुफ्तगू का एक स्टाइल है या उसका खबरें पढ़ने का जो स्टाइल है, उसका जो एक पूरे का पूरा एक तासुर है, आप उससे फेमिलियर होते हैं उसके लबो लहजे से. तो वो आपका एक तरह से फैमिली मेम्बर बन जाता है. सो द अनदर डिफरेंस इज radio news has got personal approach and newspaper news has got impersonal approach. इसके अलावा जो न्यूज़पेपर है उसमें जो खबरें हैं दे आर स्कैटर्ड एक्चुअली, के जो हेडलाइंस हैं उसके नीचे एक हेडलाइन दी गई है, उसके नीचे उसकी डिटेल आ गई है. तो जो भी आपने खबर पढ़नी है वो जिस पेज के ऊपर भी है आपको उस पेज पे जाना पड़ता है उसके बारे में जानने के लिए. लाइक अगर आपने फ्रंट पेज ही पढ़ा है और एक अहम खबर जो आप किसी भी हवाले से आपसे मुतल्लिका हो सकती है
یا کسی بھی حوالے سے وہ اہم ہو سکتی ہے، وہ پیج 2 پہ ہے، اور unluckily you could not go on to page 2. It means that you could not read that news. آپ وہ خبر نہیں پڑھ سکے. جبکہ ریڈیو نیوز میں جو بھی خبریں اس نیوز بلیٹن میں شامل ہیں، ان کی جو ہیڈ لائنز ہیں وہ نیوز کاسٹر جو ہے وہ شروع میں پڑھ دیتی ہے. So, dear students, this is all for today, and I hope that the things which we cover today you must have noted down in your notebooks. Till next lecture, Allah Hafiz.